Hello students and welcome back again to our video tutorial. And today we are going to start our new chapter, that is human health and disease. This chapter carry a good weightage in your NEET exam, and every year about 4 to 5 questions, sometimes 6, is asked from this chapter. As you are going to be doctor in future, my good wishes are with you. You will be having very fun in learning this chapter, and that chapter is going to be very interesting. In this chapter, you are going to deal with all the aspects of health, different type of common disease by which our population suffer, their probable treatments. So first let me tell you what we are going to deal in this chapter, different topics which we are going to deal, and then one by one we will be studying those topics in detail. This chapter is quite lengthy, I must say, and you will be having many lectures on this chapter. The frequency of lecture uploading would be more quick this time, but there are no issues as this chapter is really very interesting. So in this chapter, first we will be learning about the common concept of health. What was the old concept of health and what is the modern concept of health? Then what are the factors affecting health? What is the definition of disease? What is a disorder? What is a syndrome? What are disease causing agents? What are the different methods of transmitting disease? That would be about the introduction part. Then this health topic, we are going to learn about different type of diseases. There are certain which are caused by bacteria. About 8 to 10 diseases would be discussed. Caused by virus, caused by protozoa, caused by helminthics, roundworm and flatworm both, even the ringworm infection. The first part of the chapter would be dealing with several diseases, their sign and symptom, their method of detection, and eventually their treatment. The second part of chapter, that would be a little bit new to you guys, that would be immunology, and we are going to discuss about different aspects of our immune system, different classification of immune system, and how our immune system works. So second part of the chapter would be about the human immune system. Later on in this chapter, we will be learning in detail about AIDS and cancer, the two diseases which are in detail in our syllabus. After completing that AIDS and cancer topic, we will be discussing about different type of drug abuse, drug addiction and alcohol addiction, and effect of those chemicals on our body, how to prevent those addictions and how to get rid of that addictions. So these are the certain things which we are going to discuss in this chapter. I wish you very good luck in learning, and let us start the chapter now. So starting from the concept of health, how you define the term health? Health never ever means merely any absence of disease or physical fitness. If you are physically fit, it never means you are healthy. If you are not having sign and symptom of any disease, it never means you are healthy. So I will be telling you a very complicated and well organized definition of health later on. Initially, health, it does not means merely any absence of disease or sign and symptom, or health never means about physical fitness. Health never means about physical fitness. You might be having a person who is physically very fit but he suffers from asthma, so you cannot call it healthy. Might be somebody who is physically very fit but he is having skin rashes. Oh, we will be learning all the things. First, let us start the definition of health, which has been given by World Health Organization. You know, nowadays World Health Organization is in news due to amid of coronavirus. WHO, World Health Organization, was set it up in 1948 in Geneva, a place in Switzerland. So headquarters of WHO is in Switzerland, in the region Geneva. It was set it up in 1948, and according to WHO, the definition of health is a complete state, remember the term complete here, a complete state of physical, person should be physically well,
mental, very important, and last but not the least, social well-being. So in order to stay healthy, you don't only need to remain physically fit, you should be mentally fit or you should be socially fit. Mental fitness means kind of behavior you are having with other person, the kind of your decisions, or social interaction should be very, I will say that should be very acceptable. So a state of health, a state where there is freedom of anxiety, when there is freedom of depression, when there is freedom of I will say physical fitness is there, mental fitness is there, you are very free to take initiatives, you are very free to start experiments, you are having a lot of confidence in all the things. So a society which is having freedom from anxiety, freedom from the depressions, freedom from all the fears, very socially interactive, mentally very balanced and physically very fit, we call that society as a health or healthy society. The first definition of health goes as a complete state of physical, mental and social well-being. We also have discussed the definition of health in reproductive health, and that was in the context of reproductive organs. In aspect of reproduction, there should be a balance there, but there should be a balance here in the physical, mental and social well-being. Is that clear to here? Alright. Now, let me tell you about the old concept of health. This is the new concept of health which has been accepted worldwide. Old concept of health, this concept, it was believed or it was proved by the father of medicine, Dr. Hippocrates, and the Ayurvedic system of India. So according to Hippocrates, I will be telling you a little bit history of medical science in a while. And Ayurveda system, health is defined as a state of body and mind. See, there is a difference between mind and difference between brain. You better know brain is an organ. And when we talk about the creative thinking, about the decision making capabilities, about the conscious actions, we call that mind. So that part of brain which is involved in the creative thinking or decision making capability, that is actually mind. I have discussed that thing in class 11 as well. So old concept of health was, it's a state of body and mind where there is a balance in human, which includes balance in human. Now I am using a term human here. What do you understand by the term human? Is that sense of humor? Answer is no. In medical science, humus pertains to, human means body fluid. In medical science, human pertains to body fluid. तो older concept ये था कि ऐसा इंडिविजुअल जिसके बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन बैलेंस्ड है, उसकी बॉडी की स्टेट और माइंड की स्टेट बैलेंस है, उसको हम हेल्दी कहते थे। इसी कंसेप्ट को अप्रूव किया था हिपोक्रेट्स और आयुर्वेदा सिस्टम ने, एंड दैट कंसेप्ट वाज आल्सो नोन एज ब्लैक बाइल कंसेप्ट. दैट कंसेप्ट वाज आल्सो नोन एज ब्लैक बाइल कंसेप्ट. लेट मी गिव यू अ आइडिया अबाउट ब्लैक बाइल कंसेप्ट के अर्लियर ऑन बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड अप्रूव थे बाय मेडिकल साइंस. ब्लैक बाइल क्या होता था, येलो बाइल क्या होता था, फ्लेजम क्या होता था एंड ब्लड क्या होता था. सो इफ आई टॉक अबाउट द अर्लियर डाटा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड और टाइप ऑफ ह्यूमर इन ह्यूमन बॉडी, और ये एक अर्लियर डाटा है, ठीक है. जब हम ब्लैक बाइल कंसेप्ट पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सिस्टम देयर आर 4 ह्यूमर्स which are generally produced in human body. They are black bile, believed to be produced by kidney and spleen, Then there was yellow bile. Liver, it was believed liver is having an important role in its production. Phlegm,
respiratory tract cell make some mucus secretion which we call phlegm. And fourth, the fourth fluid which was been approved in earlier system, it was blood. तो जब हम बॉडी फ्लूइड के बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं, इन चार चीजों के अंदर बैलेंस होना चाहिए तो आप हेल्दी है, ये अर्लियर कंसेप्ट था। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होता है, उनको एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं मेलानोकॉली। और मेलानोकॉली वो स्टेट है, वो डिजीज है जिसके अंदर आ फीलिंग ऑफ सैडनेस रहता है विदाउट एनी नॉन रीजन। तो दैट इज एक्सट्रीम सैडनेस विदाउट नॉन रीजन। तो जिनके अंदर भी ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है, दे आर नॉट वेरी सोशली इंटरेक्टिव होते हैं ना। देयर इज देखो आजकल हम उस स्टेट को डिप्रेशन भी कह देते हैं। दैट पर्सन इज वेरी डिप्रेस्ड, बड़ा उदास सा रहता है, पता नहीं किस बात से परेशान है। उस कंडीशन को देखो, डिप्रेशन इज ए लेटर स्टेज, इनिशियल स्टेज इज मेलानोकॉली। तो एक्सेस ऑफ ब्लैक बाइल आल्सो कॉज मेलानोकॉली। अब जो ऑल्डर कंसेप्ट था जो आपको याद रखना है, मेलानोकॉली इज अ टर्म जो आपको नॉलेज वाइज याद रखना है। ऑल्डर कंसेप्ट या हिपोक्रेट एंड आयुर्वेद सिस्टम ये मानता था कि जिन इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, उनको वो हॉट पर्सनालिटी कहते थे। अच्छा, वो लोग ये भी मानते थे कि जो ज्यादा येलो बाइल वाले होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। पर आपको वो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मेडिसिन यहां नहीं पढ़ना है। जो स्टेटमेंट याद रखना है वो ये जो मैं ब्लैक में लिख रहा हूं, इंक्रीज्ड ब्लैक बाइल रिजल्ट इन फीवर। वो ऐसे इंडिविजुअल्स को बोलते थे हम हॉट पर्सनालिटी। डोंट कंफ्यूज दिस टर्म इन अदर वे। सो जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होता था, उनका बॉडी टेम्परेचर बड़ा होता था, उनको फीवर लाइक कंडीशन है। ये पुराना कंसेप्ट था। तो अर्लियर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ ये था कि हेल्थ उसको कहते हैं जब बॉडी ह्यूमन के अंदर बैलेंस हो, और अगर ब्लैक बाइल ज्यादा हो जाए तो आपको फीवर हो जाता है। दिस वाज द अर्लियर कंसेप्ट। देन देयर वाज द एंट्री ऑफ ए हीरो, you know, Dr. William Harvey. My physiology student would be knowing him. William Harvey is regarded as the father of modern physiology, or father of human physiology. और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था in order to illustrate, in order to demonstrate, in order to study our circulatory system. He also got Nobel Prize for studying the whole circulatory system. और डॉक्टर विलियम हार्वे ने इन्वेंट किया था थर्मोमीटर। और उन्होंने जिन लोगों के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है, उन लोगों का जब टेम्परेचर मेजर करना शुरू किया था तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं था। तो अब सवाल आता है कि ब्लैक बाइल का जो कंसेप्ट है वो किसने डिस्कार्ड किया था? तो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इट वाज डिस्कार्डेड बाय डॉक्टर विलियम हार्वे। और कैसे डिस्कार्ड किया था? he invented thermometer for measuring the body temperature, and he find out that persons or individuals with high black bile do not have high temperature. तो ये हो गया बेटा कुछ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में क्या? ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। तो व्हाट इज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ? बैलेंसिंग ह्यूमन, एंड इट हैज बीन डिस्कार्डेड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू what are the advantages of staying healthy, and then a little bit history of medical science, factor affecting health, how to maintain good health, what is disease, what are the causes of disease, what is classification of disease, what is pathogen, and what is mode of transmission. These are the certain topics which I am going to cover today in the introductory lecture. All right, so what are the advantages of good health? There is no fun in telling these things like at your age, at your standard. Individuals know about the advantages. The first advantage is that good health it enhances your performance in your daily life, or I will say person with a good health are more efficient at work. Person with good health, first good health bring efficiency. Good health bring efficiency.
Persons with good health are more efficient at work. They can record your lecture later in the night, early in the morning. They can your doubt every time. This is one of the benefit of good health. Second is productivity. So productivity is increased, and productivity also bring economic prosperity. Bring economic prosperity. So a very simple concept. If you want to be very rich, the must required thing is a good health. Third, if I talk about MMR and IMR, they have been increased or decreased? They are decreased due to good health. If I talk about lifespan, longevity in life due to good health, longevity of life is increased or decreased? It must increase, right? High or more or longer lifespan. What are the advantages, more advantages of good health? A good personality, good personality, right? Next, a good family life. So there are certain advantages of having a good health. The major one is efficiency, productivity, longevity, decreased MMR and IMR, personality and family life. Is that clear? Even the person is able to take initiatives. A good health also make a person to take initiatives, and initiative is something which make miracle to happen. If you do not initiate to do anything, the thing would not be completed, right? Alright, so these are certain advantages of good health. Let me go on the history of some medical science. Let me introduce with some names which you must remember in learning the medical science of health and disease, and then we are going to concept about going to discuss about the factor which affect our health. So history of medical science. You know who is known as man of medicine? We all know about the father of medicine. Let me start with history of medical science. There are certain renowned researcher and scientist which has been awarded by special titles. The first title which I am going to discuss is man of medicine, and we must be proud about it. He was an Indian, right? He is Indian and he will be Indian. पुराने जमाने में ऋषि वगैरह को जानते हैं आप? ऋषि मुनि के बारे में सुना होगा. So there is a very famous rishi. The name of that is L-1. So doctor, let's call him doctor. L-1 rishi is regarded as the man of medicine. If you have been asked about father of medicine title goes to Dr. Hippocrates. और आप अपनी मेडिकल की बुक्स में तो हिपोक्रेट्स के सर हिपोक्रेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट? मेडिकल कॉलेज में जाकर आप एक ओथ भी लेते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ उसको कहते हैं कि आई एम गोइंग टू सर्व द सोसाइटी एंड ऑल दैट थिंग. जो हिपोक्रेट्स है, ही गॉट वेरी गुड अटेंशन व्हेन ही एक्चुअली डिफाइंड और व्हेन ही एक्चुअली वाज एबल टू एक्सप्लेन द साइंटिफिक कॉज ऑफ अ डिजीज. और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिजीज, the credit goes to Hippocrates. He give scientific explanation of disease. All right. Next, then come father of Ayurveda, the guy who make us to learn about our metabolism, about our immunity, and even digestive system. Father of Ayurveda is regarded as Dr. और श्री चरका. लिखते चरका है, इसको चरक कहते हैं. चरक संहिता करके आप एक आयुर्वेद की किताब पढ़ेंगे. And why he got so much attention? He actually discussed our metabolism, digestion, and even immunity system, and even immunity system.
Is that clear? Then comes father of bacteriology. Majority of bacteria are infecting us. They are the major causes of disease. Father of bacteriology, Dr. Rudolf Virchow. Dr. Rudolf Virchow was the father of pathology. Rudolf Virchow is the father of pathology. Robert Koch is the father of bacteriology. Rudolf Virchow is the father of pathology. Rudolf Virchow. He is the father of pathology. And if I talk here about the father of surgery, again the Indian is here. He was the first guy जिन्होंने एक सर्जरी में कुछ ब्लड लीच यूज किए थे एज एंटीकोगुलेंट. तो जो भी ब्लड लीकेज था बॉडी से उसको कंट्रोल करने के लिए सर्टेन ब्लड लीकेज वर यूज्ड. एंड later on he was regarded as the father of surgery. The name is Susruta. The name is Susruta. And why he got all the title? He used blood leeches as anticoagulant during what? During surgery. Then एक दो आदमी को आप याद रख लेना. फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जिनके बारे में भी जिक्र कर रहे थे हम, डॉक्टर रॉबर्ट कॉच. और रॉबर्ट कॉच ने खूब सारे बैक्टीरिया को स्टडी किया था. अगर आप टीबी के बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसको हम कॉच डिजीज भी कह देते हैं. टीबी वाज स्टडीड बाय हिम, इवन कॉलेरा वाज स्टडीड बाय हिम. Right. So man of medicine, father of Ayurveda, pathology, surgery, bacteriology. एक दो नाम और शायद इनको तो आप जानते भी होंगे. Who is regarded as father of blood grouping? Father of blood grouping. क्लास 11 में पढ़ाया जिनके बारे में मैंने. डॉक्टर कॉल लैंडस्टेनर. And last but not the least, father of physiology, modern physiology. Who is father of modern physiology? Yes, please. Dr. William Harvey. Dr. William Harvey. He is well known for rejecting the old concept of health, which I just told you. And the last one, इनका भी नाम लिख लेते हैं. Who is regarded as father of immunity? क्यों किसी की आत्मा को नाराज करना? Father of immunity. Have you ever heard about smallpox vaccine creation? Yes, sir. We have studied in lower classes. Dr. Edward Jenner, for discovering the vaccine of smallpox, he is regarded as father of immunity. देखो लुइस पास्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो हम इम्यूनिटी में पढ़ते जाएंगे. So here are certain names, some certain history about the medical science which you really need to remember. Is that clear? Next, I am going to tell you about the factors affecting health. A factor could be a genetic factor, it could be your infection, or it could be your lifestyle. So there are three major factors which are affecting our health. Next is factors affecting health. And the three major factors which are going to affect our individual's health. The first factor is genetic factor. Second factor is infection, and third factor is lifestyle. One by one I will be discussing all these three. देखो जो जेनेटिक फैक्टर होता है, जेनेटिक डिफेक्ट की बात करें, जेनेटिक डेफिशिएंसी की बात करें, जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, they are the one which are going to affect our health. For example, mother or father, one was genetically challenged, he was suffering from a genetic disease. Obviously that baby is having chances for the suffer, or there is a problem in recombination of genes or XYZ whatever. So there are certain genetic defect which has been inherited from parents since birth. In your chapter inheritance, you are going to learn a lot of genetic disease.
first, genetic defect can affect your health. Infection, that infection could be a viral infection, a bacterial infection, a protozoal infection, a helminthic infection, a ringworm infection, or XYZ जो भी infection that can affect our health. And third is your lifestyle. Either you are having a very sedentary lifestyle, जो लॉकडाउन में हो रखा है हमारा, obesity is very common, or you are having a very hectic lifestyle. You are not having a good sleep or sound sleep of 6 hours or 7 hours. You are not having your meals at time or whatsoever. So your lifestyle, either it is very sedentary, it is very hectic or whatsoever, type of infections and genetic defect. These are the three factors which has been affecting our health. जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ तो आप तीन फैक्टर जरूर याद रखेंगे. Is that clear? Next we are going to discuss how to maintain good health, and then I am going to discuss about disease. How to maintain good health. Yes, this is something which we all must know. Maintain good health. Yes, I am expecting first one from your side. सर सबसे पहले तो बैलेंस डाइट की बात करते हैं. बैलेंस डाइट शुड बी देयर. देखो बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो आपका टाइमिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है. टाइमिंग है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है मुझसे. क्लास 11 में आपने सर्केडियन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, एंड ऑल द हीमोस्टेसिस, ऑल द इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर फॉलोइंग सर्केडियन साइकिल. तो देयर शुड बी बैलेंस्ड डाइट. न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. यू बेटर नो अबाउट द विटामिन डेफिशिएंसी, यू बेटर नो अबाउट द मिनरल डेफिशिएंसी एंड अदर थिंग्स. तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, और बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप उसको सही वक्त पे भी खाते हैं. तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर आर मोर चांसेस दैट यू आर हेल्दी. आप ज्यादा पिज्जा वगैरह या ज्यादा बर्गर्स वगैरह ना खा रहे हैं, ना दोस्तों को चिढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट, बैलेंस डाइट के साथ साथ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइजीन मीन्स साफ सफाई. देयर शुड बी पर्सनल हाइजीन. Brush your teeth twice a day, otherwise there are more chances of getting dental caries. So many bacteria. You know what happens? रात के वक्त आपने खाना खाया, obviously फूड के अंदर सबसे रिच न्यूट्रिएंट क्या है? There are lot of carbohydrate, or I will say there are lot of sugars. और आप बिना ब्रश किए सो गए. So you are allowing a good food for those bacteria, and they would be feeding on that sugar, and that would be making a lot of acids, and those acids are going to damage you. So like taking bath daily makes you free from bacteria. Washing your hand is very important. Even brushing is very important. You got my point? So personal hygiene should be there. And second, even personal hygiene में ना आपका dandruff in your head भी cover करता है. ठीक है? Then there should be social hygiene as well. कि आपके घर में कितनी साफ सफाई है, आप जो बर्तन यूज कर रहे हैं वो साफ थे या नहीं थे, आप जहां पे बैठ के खाना खा रहे हैं वो एरिया कैसा है, ऑल द थिंग. तो फर्स्ट इज बैलेंस डाइट, सेकंड इज हाइजीन, थर्ड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. और आप पढ़ते ही होंगे योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड फ्रॉम द टाइम इमोरियल. काफी लाइक सदियों से योगा चलता आ रहा है. जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग व्हिच हैपन टू योर बॉडी. सबसे पहले तो आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, मसल टोनिसिटी मेंटेन होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है. और एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा तभी आप मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट कर पाएंगे. आपका ब्रीदिंग सिस्टम वो अच्छे से काम करेगा. तो प्रॉपर एक्सरसाइज लाइक योगा शुड बी देयर इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड ब्लड प्रेशर, मेंटेन अ गुड मसल टोनिसिटी एंड ऑल द थिंग्स. Moreover, what are the other factors which help you to maintain good health? So balanced diet is there, hygiene is there, exercise is there. Then if I talk about edibles, जो भी आपके edibles है that should be neat and clean, or that should be properly washed. That also help you to maintain good health. Then और क्या फैक्टर आ सकता है? What will be the other one?
Regular medical checkups, nah, let it be. Regular medical checkups are not that much important. तो बच्चे ये कुछ फैक्टर्स हो गए which actually help you to maintain good health. एक दो और है which are not clicking in my mind right now. Just give me a few seconds to remember those. So balanced diet is doing its effect, hygienic condition is doing its effect, exercise is doing its effect, edibles are doing its effect. Then चलो वो जितने भी आपके ना आसपास में जो भी वेक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, वो इसमें कवर हो जाएगा. राइट, तो दैट इज अबाउट जनरल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड आई रियली बिलीव दैट इज क्लियर अप टू हियर. ठीक है, अब शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजीज से. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ डिजीज हियर. हाउ यू डिफाइन डिजीज? व्हेन देयर इज malformation or malfunctioning of body's one or more organ or system, any condition in which one or more body's system or organs are adversely affected, showing some sign and symptom, we call that condition as disease. तो disease का definition होगा when one or more bodily organs or system are adversely affected, resulting in pathology, resulting in sign and symptom. We call those conditions as disease. देखो यहाँ पे आई रियली वांट टू मेक यू क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजी. डिजीज क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है और सिंड्रोम क्या होता है. तो डिजीज तो समझ में आ गया कि भाई आपके पास एक ऐसा कंडीशन है जब आपके एक या एक से ज्यादा ऑर्गन सही से काम नहीं कर पा रहे, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डिजीज. देन डिजीज की वजह से जो इफेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ हार्ट डिजीज, यू आर हैविंग ए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से आपकी जो बीटिंग ऑफ हार्ट है उसकी जो रिदम है वो खराब हो गई है, इरिदीमिया हो गया है. तो डिजीज की वजह से जो कंडीशन डेवलप, कंडीशन वर्ड यूज नहीं करनी चाहिए, जो पैथोलॉजी डेवलप हुई उसको डिसऑर्डर कहेंगे. सो इरिदीमिया वुड बी अ डिसऑर्डर. और जब आपके मल्टीपल साइन एंड सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, आपके खूब सारे ऑर्गन इफेक्ट हो गए हैं, आपका हार्ट भी सही से काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, लंग्स काम नहीं कर रहे सही से, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड, उस कलेक्टिवली टर्म को बोलते हैं सिंड्रोम. तो डिजीज लीड्स टू डिसऑर्डर, डिसऑर्डर लीड्स टू सिंड्रोम. आप पढ़ते हो डाउन सिंड्रोम, उसमें 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी हो गया और बर्थ के टाइम पर ही मल्टीपल फिजियोलॉजिकल फिजिकल डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं. तो डिजीज लीड्स टू डिसऑर्डर, डिसऑर्डर लीड्स टू सिंड्रोम. पहला कंसेप्ट तो ये हो गया. दूसरा कंसेप्ट साइन और सिम्टम में क्या फर्क होता है. देखो जब हम सिम्टम की बात करते हैं, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, जब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की तो सिम्टम की बात कर रहे हैं, और जब नॉन सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हम साइन की बात कर रहे हैं. सिम्टम जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल फील कर सकता है, इट इज फेल्ट बाय इंडिविजुअल और पेशेंट. लेट मी गिव एन एग्जांपल. A patient is having a back pain. Can you feel his back pain? Answer is no. That's a symptom. A patient is having rashes. उसकी स्किन के ऊपर रैशेज आ गए, तो रैशेज तो एक्सटर्नली विजिबल है सभी को. तो जो एक्सटर्नल विजिबल होते हैं उनको बोलते हैं साइन. जो एक्सटर्नल विजिबल है, जो किसी को भी हो सकते हैं, जो दूर से देख के पता चल जाता है, वो साइंस है. और जो पेशेंट खुद फील कर सकता है वो सिम्टम है. Is that clear? तो सिम्टम याद रख लेना, सिम्टम इज फेल्ट बाय पेशेंट, दे आर सब्जेक्टिव, साइंस आर कॉमन. फिर डिजीज, डिसऑर्डर और सिंड्रोम के साथ एक कंडीशन वर्ड भी यूज करते हैं, उसके लिए मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है. तो कंडीशन एक जनरल टर्म है. जब आपकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जनरल टर्म कहते हैं कंडीशन. कि फॉर एग्जांपल उसको ना कुछ ही इज हैविंग सम साइकिक प्रॉब्लम, तो उसको एक मेंटल कंडीशन हो गई है. तो कंडीशन इज अ वेरी कॉमन टर्म और वेरी फॉर्मल टर्म. ठीक है बेटा, let it be. So what I am going to tell you, what is a disease when one or more organ, when one or more bodily organ or system are adversely affected, resulting in sign and symptom, we call that
disease. What are the causes of disease and what are the different type of disease? Let us discuss right now. There are so many causes which can lead to disease. Causes को तो ना मैं एक टेबल में ही बना दूंगा. Just let us have a formal discussion about causes of disease. Causes of disease आपका deficiency हो सकता है. Deficiency of nutrient can cause a disease. Causes of disease आपका एक infection हो सकता है. Causes of disease आपका एक biochemical हो सकता है. उसको उस हार्मोन की कमी की वजह से कोई बीमारी हो गई, उस हार्मोन की ज्यादा होने की वजह से कोई बीमारी हो गई, वो एंजाइम ज्यादा नहीं था इसलिए बीमारी हो गई, या एंजाइम ज्यादा बन गया था इसलिए, जो भी आपके बायोकेमिकल्स होंगे. इट कुड बी मैकेनिकल एज वेल. द कॉज ऑफ डिजीज कुड बी मैकेनिकल. देन और क्या क्या हो सकता है कॉज ऑफ डिजीज? एक्सोजीनस पैथोजन, आउटसाइड द बॉडी कोई पैथोजन आया उसने आके इन्फेक्ट कर दिया. तो जब हम कॉज ऑफ डिजीज की बात करेंगे, इट कुड बी अ डीजनरेटिव डिजीज, एज के साथ साथ बीमारी होनी शुरू हो गई. तो ये कुछ, इट कुड बी जेनेटिक एज वेल. ये कुछ कॉज है, पहले मैं ये डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर एक चार्ट बना देता हूं. डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो डिजीज होता है. इन्फेक्शन, बैक्टीरियल पैथोजन जो भी है आपका, राइट, बैक्टीरियल वायरल जो पढ़ा आपने. बायोकेमिकल्स क्लियर है, हार्मोन, एंजाइम. मैकेनिकल इंजरीज could result in that. Exogenous agents can result in a disease. Like allergy is exogenous agent. वो घूमने गया था गांव में उसको एलर्जी हो गई, खूब सारे डस्ट पार्टिकल्स है, दैट इज ए कॉज ऑफ डिजीज. डीजनरेटिव जो उम्र के साथ साथ होती रहती है, आर्थराइटिस से कॉमन एग्जांपल अभी मैं टेबल में मेंशन कर दूंगा. और जेनेटिक डिजीज आर वेल नोन. ठीक है बेटा, तो नाउ आई एम गोइंग टू ब्रॉडली क्लासिफाई डिजीज. कि डिजीज को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं. कुछ डिजीज फ्रॉम द बर्थ होती है, कुछ आपको एक्वायर करनी पड़ती है. तो व्हाट आर कॉन्जेनिटल डिजीज, व्हाट आर एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज में क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा एंड ऑल द थिंग, राइट. सो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, we are not going lengthy lecture, na? The lecture is not being very lengthy. Just give me few more minutes. I will be binding up things, and that is the introductory lecture. I am not going to teach. I am not teaching you like new things here. These are the general things which class 12 student actually knows about the human health and disease or about the medicinal science. Classification of disease. Classification of disease. Disease could be classified as congenital disease, or these disease could be classified as acquired. So basic difference in that disease, that is since birth, और जो acquired होती है they are after birth. Actually they are after birth. कोई चीज जो since birth होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं innate. विद द बर्थ है आपको. कौन कौन सी डिजीज कॉन्जेनिटल हो सकती है? इट कुड बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर, नो फन इन टेलिंग दैट. सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिक, सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर. पढ़ोगे आप इसके बारे में जेनेटिक्स में. और कॉन्जेनिटल डिजीज कुड बी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. अभी आप रिप्रोडक्शन में पढ़ भी रहे थे कि देयर आर सर्टेन एजेंट्स व्हिच इंटरफेयर इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस. उन एजेंट्स को आपने बोला था टेराटोजेंस, और फीटस को बोलते थे मॉन्स्टर फीटस. सो दैट कुड बी कॉन्जेनिटल डिजीज. डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कॉमन सा मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा यहां पर. लिप क्लेफ्ट प्लेट, और लेट्स कॉल इट हेयर लिप. ये एग्जांपल इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एम्नियोसेंटेसिस से कौन सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं आप डायग्नोज कर सकते. आंसर इज लिप क्लेफ्ट प्लेट और हेयर लिप. होता क्या है कि लेट्स से दिस इज द अपर लिप ऑफ बेबी, और जो मिडिल वाला पार्ट है, लेट्स से दिस इज द नोज हेयर, these tissues would not be developed. तो अपर लिप में थोड़ा सा जो पार्ट है वो अनडेवलप्ड रह जाता है. देखा रैबिट वगैरह कैसे होते हैं,
तो developmental disorder, it could be congenital as well. Even there are certain disorder which are passed by placenta. We call that transplacental. और ट्रांसप्लेसेंटल डिसऑर्डर में दो याद रखना, दे कुड बी कॉन्जेनिटल एज वेल. एक याद रखोगे आप सिफाइलिस के बारे में, जो कई बार और बार बार आपको पूछा जाएगा, और दूसरा याद रख लो आप जर्मन मीजल्स के बारे में. हियर आई वुड लव टू मेंशन एचआईवी भले ही पास कर दे प्लेसेंटा को, उसको कॉन्जेनिटल डिजीज में नहीं इंक्लूड करते हैं. क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? एचआईवी के सिम्टम्स लेटर इन द लाइफ शो होते हैं. So despite of the fact HIV is passed through placenta, it is not a congenital disease. AIDS is a very fatal disease, but it is not congenital. जनरली उसको acquired में पढ़ा है ना, acquired immunodeficiency syndrome. तो क्यों congenital में नहीं रखा AIDS को? क्योंकि जो symptoms है वो later in the life आएंगे. इसके जो symptoms होंगे ये early in the life में शुरू हो जाएंगे आपको. तो पहला जो पार्ट होगा बच्चे, वो डिजीज जो फ्रॉम द बर्थ होती है, देन जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको, यू नीड टू एक्वायर दैट इन्फेक्शन. Acquired disease could be infectious or could be non-infectious. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो communicable disease, non-communicable disease. Let me tell you little bit about that as well. कुछ बचपन की तो यादें ताजा होनी चाहिए ना आपकी. It could be infectious or it could be non-infectious. तो पहले infectious की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, फिर non-infectious की तरफ चलेंगे. जो इन्फेक्शियस होते हैं उनका दूसरा नाम होता है कम्युनिकेबल. दे कुड बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल, दैट्स व्हाई द नेम कम्युनिकेबल. अब दो तरह की होती हैं, एक होती है कंटेगियस और दूसरा होता है नॉन कंटेगियस. जो कंटेगियस होती है बेटा, उसमें आपको डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत होती है, That is why direct contact. और जो नॉन कंटेगियस होती है उसमें वेक्टर की जरूरत होती है. Anything which has been passed by a vector we call that non-contagious disease. Contagious में अगर मैं बात करूं, direct contact, for example, have you ever heard about ringworm infection? उसको ringworm infection हो रखा था, आपको भी हो गया direct contact की वजह से, contagious disease है. यह कंजक्टिविटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज कंजक्टिविया, वो कंटेगियस है. कंटेगियस में इट कुड बी बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल. So if I talk about AIDS, HIV, it's a kind of contagious disease. It could be by contaminated food as well. For example, typhoid, it's a contagious disease. जब नॉन कंटेगियस की बात करते हैं, they require a vector. For example, malaria. Who is the vector of malaria? Anopheles mosquito. It's a non-contagious disease. तो जब किसी वेक्टर के थ्रू इन्फेक्शन जा रहा है तो उसको नॉन कंटेगियस कहेंगे, और जब किसी आई विल से डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कंटेगियस. ये तो हो गया आपके इन्फेक्शियस के बारे में. ठीक है, वेक्टर हो या व्हीकल हो, आइदर इट्स अ वेक्टर और इट्स ए, चलो वेक्टर ही याद रख लोगे. नाउ कमिंग ऑन हियर, व्हिच आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. The non-infectious, these are acquired non-infectious, right? Is non-communicable, or they could be further classified as follow. How they are classified? These could be your deficiency disease. Deficiency में आप example याद रखेंगे, है ना? Protein energy malnutrition, Kwashiorkor disease, Kwashiorkor disease, और marasmus disease, और बेरी डिजीज. ये जितनी भी है ये आपकी कैसी हैं? दीज आर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. और ऐसा नहीं अगर एक को बेरी तो दूसरे को हो जाएगा. दे आर नॉट इंफेक्शियस. देन आप इसमें याद रख सकते हैं, सेकंड वन इज डीजेनरेटिव, जो अभी बता रहा था मैं आपको,
उम्र के साथ साथ जो आपको बीमारी हो जाती है ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन, दीज आर डीजनरेटिव डिजीज. क्लासिकल एग्जांपल इज arthritis. Arthritis is a degenerative disease. Even cardiovascular condition, cardiovascular abnormality, they are degenerative disease. Is that clear? Or atherosclerosis. Atherosclerosis, it is also degenerative disease. Next, what could be the other non-infectious disease? Other non-infectious disease could be a kind of allergy. It could be a kind of allergy. Classical example is rhinitis. Rhinos और rhinos जो वर्ड यूज होता है वो कैविटी ऑफ नोज के लिए होता है. तो किसी को अगर इन्फेक्शन हो रखा है, वो एक होता है साइनस प्रॉब्लम, ऐसे ही आपका नेजल इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम होता है, दैट इज राइनाइटिस. कॉमन कोल्ड से वो अलग होता है. ठीक है. देन इट कुड बी योर लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल की वजह से कौन सा होगा? लेट मी मेंशन हियर ओबेसिटी. नॉन इन्फेक्शियस कुड बी ए कैंसर एज वेल. सो कैंसर इज अ काइंड ऑफ non-infectious disease which has been acquired by your life, despite of the fact cancer do run in families. There are certain genetic causes of cancer as well, but majority of cancers are acquired, right? Then there could be mechanical injuries as well, fractures, mechanical injuries as well, like fractures. तो जब बात करेंगे बेटा डिजीज का, तो डिजीज का दो क्लासिफिकेशन हो गया. वो कॉन्जेनाइटल होती है, एक्वायर्ड होती है. कॉन्जेनाइटल फ्रॉम बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ. एक्वायर्ड में वो कंटेगियस होती है, नॉन कंटेगियस होती है. और नॉन कंटेगियस, एक्वायर्ड में इन्फेक्शियस होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है. इन्फेक्शियस में कंटेगियस, नॉन कंटेगियस, और नॉन इन्फेक्शियस में ये क्लासिकल कैटेगरीज 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज ऑफ डिजीज. इज दैट क्लियर? ओके. देन you should not forget that even the mental conditions, mental disorders is a kind of non-infectious disease. Psychosis, neurosis, depression, anxiety, these all are kind of non-infectious disease. ठीक है बेटा, डन अप टू हियर. Now let me give you the concept of pathogen and parasite. Disease causing agents are normally referred as to pathogens. Pathogens, these are simply disease causing agents. जो वर्ड ही बना है, any microbe, any material which have a potency to generate a pathology is known as pathogen. Disease causing agents. फिर एक कंसेप्ट आता है आपके पास पैरासाइट का. पैरासाइट वो इंडिविजुअल होते हैं जो फीड करते हैं होस्ट के ऊपर. फीड अपॉन होस्ट. क्या सारे ही पैरासाइट पैथोजन होते हैं? आंसर इज नो. देयर आर सर्टेन पैरासाइट जो आपके ऊपर फीड तो कर रहे हैं पर वो आपको बीमारी नहीं कॉज कर रहे हैं. तो आप ये भी याद रख लेना, all parasites are not pathogenic. There are certain good parasites which also lives in our gastrointestinal tract and they are not allowing the destruction of, so many bacteria lives in our body, they are not allowing any pathogenicity. So most of the parasites are pathogenic, all of the parasites are not pathogenic. Do you want to remember or do you want to learn example of certain non-pathogenic parasite? Classical example is Enta-amoeba coli. Right? Then there is other example. अगर आपसे पूछा जाए which is the most abundant non-pathogenic parasite present in our body, the most abundant
known pathogenic parasite present in our body, the name would be Blastocystis hominis. That is the most abundant known pathogenic parasite present in our body, right? And even one more is there, Endolinex nana. Yes, 29 to 30% Endolinex nana is present in our Endolinex nana. This make up about 35%, this make up about 29%. You don't need to remember that. अगर आपसे कभी पूछा जाए क्या सारे पैरासाइट पैथोजेनिक होते हैं, आंसर इज नो. एंटामीबा कोलाई का ई कोलाई, एंटामीबा कोलाई और इश्चीशिया कोलाई दो अलग अलग हैं. तो ई कोलाई के एंटामीबा कोलाई के बारे में दो याद रखें. ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस इज वेरी गुड एग्जांपल. So I told you that there are pathogens which causes disease. Now these pathogens or these parasites, it could be bacteria. अब आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? Bacterial disease पढ़ेंगे. It could be a virus. It could be a helminth. It could be a protozoa. Or it could be a fungus. ये कुछ मेजर डिजीज तो हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के. ठीक है बेटा. Now, last part of introductory lecture would be the method of transmission. दो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है. So what is meaning of direct contact and what is the meaning of indirect contact? Let me tell you here. In method of transmission, actually जो method of transmission की टर्मिनोलॉजी है आगे चल के यूज होने वाली है. So let me tell you about method of transmission, how the disease are transmitted. Transmission, first there could be direct contact or they could be indirect contact. डायरेक्ट कांटेक्ट में पहला तो एग्जांपल उसी का पढ़ लेते हैं आप. डायरेक्ट कांटेक्ट में पहला एग्जांपल हो गया आपका जो वो रिंगवॉर्म को बता के आया हूं. ठीक है बेटा. सेकंड डायरेक्ट कांटेक्ट. तो डायरेक्ट कांटेक्ट में सिंपल फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट कांटेक्ट. सेकंड टाइप ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट वी कॉल्ड इट ड्रॉपलेट मेथड. दिस इज इंपॉर्टेंट. This I really want to discuss here. If you have been sneezing, if you have been coughing, or if you are having a running nose, that can cause infection. Common cold का classical example आपने पढ़ा होगा. And that method is known as droplet method. So either sneezing is there, either coughing is there, that can result in infections. आजकल पढ़ते भी हो ना वो जो कोविड है, that is suffering, that is actually transmitted by droplet method. ठीक है. नेक्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में आप क्या याद रख सकते हैं? अगर आप कोई सॉइल वाले एजेंट से इंट्रोड्यूस हो गए, क्लासिकल एग्जांपल टेटनस, आपको एक ऐसी चीज से इंफेक्शन हुआ है, ऐसी चीज से इंजरी हो गई है जिसमें कुछ डेडली पैथोजेंस थे. सो जो डेडली पैथोजेंस हैं दे कैन कॉज disease in your body. All right, what else there could be? What about transplacentation? Transplacentation, that is also a kind of direct method. जब नॉन डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे बेटा, either disease require vector, जैसे जो आपने पढ़ा है एनोफ्लिस मॉस्किटो इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, एडिस मॉस्किटो इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू, वो इनडायरेक्ट मेथड में आ गए. और डिजीज रिक्वायर व्हीकल फॉर द कंटामिनेशन ऑफ फूड, यू नीड सर्टेन कॉकरोच, सर्टेन हाउस फ्लाई, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड. और फॉर्माइट मेथड, देयर आर सर्टेन यूज्ड आर्टिकल्स. फॉर्माइट मेथड इज used articles of individual. सर को कॉमन कोल्ड था और सर ने जो है आपने सर को मार के यूज कर लिया, उसके अंदर जो वायरस हो गया था वो आपने इनहेल कर लिया. राइट. ऑल द टाइम व्हाट यू डू, बच्चों की आदत है, दे यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर माउथ इन ऑर्डर टू गेट दैट प्लेजर. तो
तो जो भी आपके इन्फेक्टेड आर्टिकल्स हैं, चाहे वो आपका बोर्ड हो, आपका कीबोर्ड हो, आपके घर का दरवाजा हो, जो भी कुछ है, जो इन्फेक्टेड आर्टिकल के लिए वर्ड यूज करेंगे, दैट इज योर फोमाइट मेथड. तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कुड बी डायरेक्ट और इट कुड बी इनडायरेक्ट, एंड दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर. तो आज के लेक्चर में I have told you the concept of health, older concept or newer concept, advantages of having good health, factors affecting good health, how to maintain good health, what is a disease, what is symptom, what is sign, what is parasite, what is pathogen, what is disorder, what is condition, what is syndrome, all the things, classification of disease and mode of transmission. I hope you enjoyed this lecture. Please do take care of yourself. Keep studying. आप एक आदत बना लें कि पर डे का लेक्चर रोज देखना है. अब तक आप पेंडिंग में रखते आ रहे हैं, स्पेशली द नॉर्मल स्टूडेंट्स. प्लीज मेक ए हैबिट कि आप डेली लेक्चर रोज देखें और अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिए. आई विश यू वेरी गुड लक for this lecture and for the next lecture. The class is dismissed. Thank you.